Good morning, students. Welcome in online classes. Myself, Rashmi Yande, your science teacher. Students, in today's session, we are going to continue our 16th lesson. In last lecture, in that online session, we discussed about the natural resources. We discussed about the concept of minerals, ores, definition of both, mining process, how minerals are formed, classification of minerals according to their properties, some important minerals and ores. After that, fuel, types of the fuel. In that we discussed about the coal, how there is a formation of coal is occur, how there is a formation of the mineral oil, natural gas, fractional distillation process for separation of the crude oil. All these things we discussed. Today we are going to start the next part of this lesson, that is the forest resources. First of all, before the understanding the concept of forest resources, we know that all the fuels like coal, it is there, fossil fuels are there, different types of the whatever the fuels are there, their demand has increased greatly due to the rapidly growing population, but the reserves of fossil fuel are limited. It is becoming difficult to meet the increased demand. The likelihood of these reserves getting exhausted is known as the energy crisis. We know that population explosion is occurring. Population explosion यानी क्या? Beyond the limit there is the increase into the population. अभी जितना population ज़्यादा होगा उतना हमारे बेसिक जो नीड्स है वो फुलफिल करने के लिए we know that we are depend upon the nature. तो we are continuously snatching that nature. तो जितने ज़्यादा number of vehicles they get increases, the requirement of fuel is also increases. पहले 100 गाड़ियाँ थी, अभी thousands of number of vehicles are there. तो जो proportion है वो बढ़ गया है. किसका proportion? Fuel requirement का. लेकिन as compared to the demanding of the fuel, these reserves of the fossil fuel are the limited. क्योंकि हमने देखा कि fossil fuels जो है वो कैसे बनते हैं? Millions of year they require for the formation of the fossil fuels. Okay, so therefore what is our duty? Our duty it is that we have to use that fuel, that whatever the energy resources, very carefully. As the reserves of fossil fuels, namely mineral oil and coal, are limited and the demand is increasing, alternative fuels are coming into use. Hydrogen, biofuels, methanol or wood alcohol, ethanol or green alcohol are some of the alternative fuels. तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको मतलब प्रॉपरली हमने यूज़ करना है, ये तो उस पर एक रेमेडी हो गई. सेकेंड रेमेडी ये है कि अल्टरनेटिव सोर्सेज जो है जो इको फ्रेंडली हो सकते हैं वो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्म करना पड़ेगा. तो हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, मिथेनॉल, वुड अल्कोहल, इथेनॉल, ग्रीन अल्कोहल, दीज आर द सर्टेन ऑप्शंस. ये क्या है? अल्टरनेटिव फ्यूल्स है जो हम इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल वी कैन यूज दीज फ्यूल्स. ओके, highlight that line. Now forest resources. Forest, it is also a type of the resource. How? An extensive area of land covered by a variety of plant is called as the forest. So this is the definition of the forest. As a forest is a natural habitat of plants, animals and microbes. About 30% of the total land of the world is covered by the forest. Forest perform certain specific protective and productive function. What is the use of these forest? Protective and productive functions. Protective, that means it protects certain microbial species, it protects certain animal species, medicinal plants. इनका जो protection है, इनको preserve करने का काम कौन करता है? Forest. उसके बाद में प्रोडक्टिव यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, wood, different types of that is resin, gums, rubber, all these things, each and every part of a plant, it is useful. So therefore we can say that plants are the, or forests perform the protective and productive functions. So which are the protective functions? First one, to reduce the velocity of water flowing over the land.
सेकेंड वन, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन इट इज़ अ हार्मफुल थिंग. इसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है. तो प्लांट्स अगर रहेंगे तो वो क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं और सॉइल इरोजन नहीं होता है. टू हेल्प परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड. परकोलेशन दैट मीन्स ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जो है वो ज़मीन में जाना, उसे हम बोलते हैं परकोलेशन. सो सॉइल है, फॉरेस्ट है, प्लांट्स है, इसीलिए परकोलेशन ऑफ वाटर इट ऑल्सो ऑकर्स. इट कंट्रोल द फ्लड्स, टू रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, to maintain the balance of atmospheric gases. Thus, forests help improve and maintain the quality of the environment. Forest जो है environment को improve करने के लिए and whatever the quality of the environment उसे maintain रखने के लिए it plays a very important part. So these all are the protective functions of the forest. Each and every function it is an important one. Okay. Now next part it is the concept of the productive function. अभी हमने प्रोडक्टिव फंक्शन तो देख लिया. प्रोडक्टिव फंक्शंस क्या है? इन प्रोडक्टिव फंक्शंस certain medicinal plants are there. These type of examples are the medicinal plant example. ये जो medicinal plant है like अडूसा, बेल, नीम, you know that these are the common one. ये जो है अलग अलग जो diseases है, एलर्जीज है, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि कफ एंड कोल्ड, डायरिया, फीवर, कोल्ड, कैंसर, डायरिया, नॉशिया, मलेरिया. So these different types of the diseases are there. During of these medicinal plants are there. Because students, we know that India has a great variety in Ayurveda. बहुत मतलब इंडिया में स्पेशलिटी जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन की स्पेशलिटी बहुत ज़्यादा है. तो these medicinal plants are very important one. Now second product it is the wood. We get strong and durable wood as also firewood from tree like teak, mahogany, neem, acacia, subabur. Wood is used for making furniture, farming implements and various other articles as well as in the construction work. Forest wealth includes fibers, paper, rubber, gum and aromatic substances. We get fragrant essential oil from lemongrass, vanilla, kevada, vetiver that is the khas and the eucalyptus. Sandalwood and oil of the eucalyptus are used for making soaps, cosmetics and essence sticks. अगरबत्ती, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ये सब बनाने के लिए हम ये इसेंशियल ऑयल्स जो है ये यूज़ करते हैं. दीज आर द एरोमेटिक, यानी उसको अच्छा स्मेल होता है, उसको अच्छा फ्रेगरेंस होता है. In addition, we get various fruits, bulbs and roots, honey, sealing wax, after that catchu, dyes and etc. from the forest. तो ये सभी जो है these are the productive functions of the forest. Students, here conservation of forest, the concept of that it is, because conservation of forest it is very essential one. ये जो plants है not only medicinal plants, लेकिन कोई भी प्लांट हो, आपको पता है कि प्लांट इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन बैलेंसिंग द नेचर. हमें वो ऑक्सीजन देता है, खुद कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है, कंज्यूम करता है फॉर फोटोसिंथेसिस. इट मेंटेन द डिफरेंट गैसियस साइकिल. यस, तो प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी है. तो कैसे कंजर्व करें फॉरेस्ट? यंग ट्रीज शुड नॉट बी कट. मेनी मोर ट्रीज देन आर कट डाउन शुड बी प्लांटेड एंड लुक्ड आफ्टर. एक प्लांट अगर कट कर रहे हो तो 10 प्लांट पहले आपको प्लांटेशन उनका करना पड़ेगा, फिर आप एक प्लांट कट कर सकते हो. ये कंसेप्ट हम सभी ने अडॉप्ट करनी चाहिए. द स्ट्रिक्नेंट रिस्ट्रिक्शंस, लॉज, रेगुलेशंस रिगार्डिंग यूज ऑफ द फॉरेस्ट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. तो ऐसे ही कोई भी प्लांट जो है वो हमें कट नहीं करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इट इज़ द ओशन रिसोर्सेज. We have learned that oceans occupy a greater part of the earth's surface than land does. लास्ट ईयर तो हमने फर्स्ट लेसन में ही देखा था कि ओशन जो है सबसे ज़्यादा एरिया अगर कोई किसी ने कवर किया है तो वो ओशन ने किया है. यस, एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम ओशंस. सी वेव्स एट हाई एंड लो टाइड एंड ओशनिक करंट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ द पावर.
तो जो सी शोर्स है यानी सी एरिया जो है वहाँ पे जो है पावर जनरेशन ओशनिक करंट से, लो एंड हाई टाइड से भी होता है. लास्ट ईयर वी हैव लर्न समथिंग अबाउट दिस इन जियोग्राफी. There are reserves of a variety of natural resources in sea water, at the bottom of sea and beneath the seabed too. These resources available from seas and oceans are called as the marine resources. Marine water, that is the sea water. तो सी वाटर जो है उसे तो हमें सॉल्ट मिलता ही है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिनरल्स वी गेट फ्रॉम दैट सी. नॉट ओनली द सी वाटर, इट इज़ सबसे पहले सी वाटर अगर यूजफुल है तो वाटर साइकिल, रेन साइकिल जो है ना, वाटर साइकिल, उसमें जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट. अगर ये वाटर साइकिल नहीं जनरेट होगी तो रेन फॉर्मेशन नहीं होगा. उसी के साथ साथ जो है सी वाटर सॉल्ट और मिनरल्स के लिए तो है. उसके अलावा बीनीथ द सी बेड ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रीशियस थिंग्स आर देयर. और हमने कल के सेशन में ही देखा था कि मिनरल्स ऑयल इट गेट फाउंड इनटू द depth of the sea. All things we get from the marine resources, that is the ocean resources. Now here last part of this lesson, mineral and bio resources from the ocean. Minerals and bio that means living things. So mineral and bio resources, जो रिसोर्सेस हमें लिविंग थिंग्स के थ्रू मिलते हैं उन्हें हम बोलेंगे बायो रिसोर्सेस. Scientists believe that billions of tons of minerals are to be found dissolved in ocean water. There are very large reserves of tin, chromium, phosphate, copper, zinc, iron, lead, manganese, sulfur, uranium, etc. in the ocean and the seabed. साइंटिस्ट का मानना तो ये है कि बहुत सारे मेटल, नॉन मेटल, these are the minerals overall, they are present into the sea water. We get many types of gems, conches, shells and pearls from the sea. Real pearl are even costlier than gold. There are large scale reserves of mineral oil and natural gas at the bottom of sea. We avail of these by drilling oil and gas well. ये टेक्निक कल ही हमने देखा था कि जो गैस वेल से, जो ऑयल वेल से, उसमें से हम ऑयल जो है वो सेपरेट करके फिर प्यूरिफिकेशन करके वी कैन यूज दैट. मिनरल रिसोर्सेस फ्रॉम ओशंस. देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ द ऑयल वेल. ओके, इन इंडिया द फर्स्ट मिनरल ऑयल वेल सागर सम्राट was drilled in 1974 at the oil field called Bombay High for obtaining mineral oil and natural gas from the bottom of the sea. The natural gas from this well is carried via a pipeline to a place called as the Uran. Now this is the picture of that oil well. Yes, so mineral resources from the oceans. कौन से minerals form होते हैं? Thorium which is used for the production of atomic energy. After that, magnesium used in the flash bulb of a camera. Potassium, the main ingredient in the production of the soap, glass and fertilizer. Potassium. Sodium, it is used into the production of the cloth, paper, salt. Sulfate, using in the making of artificial silk. So these all are the minerals which has the different uses, and these all minerals we get from the oceans. After that, bio resources in the ocean, जो living things हमें मिलते हैं. First of all, it is the fishes like pomfrets, seed fish is also as also shrimps and prawns. They are sources of proteins and vitamins. Therefore, mainly used as a seafood. Dried shrimp, Bombay duck powder, used as a poultry feed and is a good manure. Shells, used for the preparation of medicines, ornaments and decorative articles. Fungi, different fungi are also obtained from that, used for the production of antibiotics. Shark and codfish, used for producing edible oil rich in vitamin A, D and E. These are the vitamins which are required for our body. Sea cucumbers, used as medicine for treating cancer and tumors. So students, ये जो है बायो रिसोर्सेस
which are found into the ocean. So this is all about your lesson, 16th lesson, that is the natural resources. Different occupations are there. This is the information for you. Fishing, that is the main occupation. Salt farming, a big industry, it is there. Transport business, transport by the sea. Sea tourism, means of financial income. Manufacturing decorative articles, these are the marine occupations. यानी sea related, marine area से related कुछ occupations, opportunities are there. Natural resources are important for meeting our needs. Reserves of some resources are limited. There is a danger that excessive use will lead to their early depletion. We must keep a control on the uses of natural resources to maintain the balance in the nature. So this is the very important lesson, क्योंकि बहुत सारे things हमें ये lesson से सीखने को मिले हैं. Which are the natural resources and all that things. Read out that complete lesson again. If any difficulty regarding to that, ask me, and complete the exercise in your workbook. Okay, thank you.